Hello my dear students, welcome to iMath Zone. This is Aminul and today I am going to discuss about the different types of functions. And in the last video I have given the introduction to the function. So these are the different types of functions. So first one is injective function or on function. Next is on-to function or surjective function. Next is bijective function. And next into function, and next one is anyone function. So the first one is injective function. So what is the definition of an injective function? A function f from a to b is said to be an injective or on function if for every x1 x2 belongs to a, mind it, this set is domain. F of x1 is equals to f of x2 implies x1 equals to x2. अब जो बात मुझे बोलना है कि ये जो टर्म है इंजेक्टिव, ये टर्म को सुनकर हम लोगों का दिमाग में क्या आता है? इंजेक्शन. सो नॉर्मली जब हम लोग किसी पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, जो सिरिंज है किसी एक को इंजेक्ट करने के बाद वही सिरिंज दूसरे किसी पेशेंट को नहीं यूज किया जाता है. सेम चीज यहां पर फंक्शन में भी होगा. कैसे? हर एक डोमेन का हर एक एलिमेंट सिर्फ कोडोमेन का एक ही एलिमेंट को इंजेक्ट करेगा. दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन विल बी रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. ये जो डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है या फिर रिलेटेड रहता है. एंड दिस इज द सिमिलैरिटी विथ इंजेक्शन. सपोज दिस इज द डोमेन ए and this is the codomain B and F is a function from A to B. So injective function F को हम लोग injective function तभी बोलेंगे अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन का सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा. मतलब यहाँ का A एलिमेंट suppose it is related to B and A2 is related to B3, A3 is related to B2 and A4 is related to B4. राइट. नाउ सी हियर, देखो यहां पर हर एक एलिमेंट सिर्फ यहां का एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसा नहीं हुआ है कि यहां पर मान लो कि यहां पर ए एलिमेंट B3 में नहीं रिलेटेड होके यहां पर A2 के साथ रिलेटेड हो गया. हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए यहां पर अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए. दैट मीन्स फॉर डिफरेंट प्री इमेज देयर विल बी डिफरेंट इमेजेस. राइट. अगर ए कंडीशन हर एक एलिमेंट का डोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई करता है तभी जाके उस फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. देखो हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट को इंजेक्ट करता है, इसको B3 के साथ. राइट. अब ये हो गया इंजेक्टिव फंक्शन. तो चलो दोनों एग्जांपल लेते हैं और दोनों एग्जांपल के अंदर एक वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन होगा और दूसरे वाला इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा. ऐसा दोनों एग्जांपल लेते हैं. Now let's take this example. Let f from R to R be a function defined by fx equals to 5. Check whether f is on or injective function. Right? So यहाँ पर on जो टर्म है, on के मतलब हर एक एलिमेंट वन एलिमेंट के लिए वहां पर एक ही एलिमेंट रहेगा कोडोमेन में, इसीलिए उसको on बोला जाता है. चलो जब पिक्चर ड्रॉ करते हैं तब इसको और भी क्लियर कर देते हैं. So the answer, let x1 is equals to 3 and x2 is equals to 4. Then calculate what will be the value of f of x1. So f of x1 equals to f of 3. So this equals to 5 given here. And similarly f of x2 is equals to f of f4 is equals to also 5. Now see here. Here x1 is not equals to x2. x1 is not equals to x2, but f of x1 is equals to f of x2 is equals to 5. Right? And this shows that the two different element of domain have the same image in codomain, and that's why this is not a injective function. So therefore f is not injective function. Injective function. The question is that f be a function from R to R. See here,
This are and this are both are real number set, right? So the domain and codomain of the given function is real number. So be a function defined by fx equals to 3x minus 7 by 5. अब क्वेश्चन ये है कि इसको तुमको इंजेक्टिव फंक्शन शो करना है. You have to show that this function is injective function. So हम लोग ये कन्फर्म है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है और इसको हम लोग को शो करना है, प्रूफ करना है. अब एक क्वेश्चन है कि कैसे प्रूफ करेंगे. Let, so this is the answer. Let x1 and x2 belongs to R. Right here domain such that f of x1 is equals to f of x2. राइट. तो हम लोग को दो एलिमेंट डोमेन में दो एलिमेंट लेना है और उन दोनों एलिमेंट को हम लोग ऐसे लेंगे कि उसका इमेज सेम हो. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल शो दैट दिस x1 एंड x2 आर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट. राइट, यही हमारा टारगेट है. तो चलो दिखाते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट see here f of x1, right? So you have to put x1 in place of x in the left side, then you will get f of x1, and the same thing you have to do here in the right side also. So you will get here 3x1 minus 7 by 5. So this implies that 3x1 minus 7 by 5, this one. So this equals to f of x2. यहाँ से कैलकुलेट कर लो क्या होता है. So if we put here in place of x2, then we will get f of x2 is equals to 3x2 minus 7 by 5. So 3x2 minus 7 by 5, right? And from the both sides you can cancel 5. Implies that 3x1 minus 7 is equals to 3x2 minus, implies that x1 equals to x2. Now see here, this was our consideration, that f of x1 is equals to f of x2, and this implies that x1 equals to x2. और यही चीज हमारा डेफिनेशन में भी था. राइट. सो टू शो ए फंक्शन दैट दिस इज ए इंजेक्टिव फंक्शन और अननोन फंक्शन, you have to consider that f of x1 equals to f of x2, and from that point you have to prove that x1 equals to x2. अगर ये पॉइंट तुम शो कर सकते हो तो बोल सकते हैं कि a function, given function is injective or on function. And the next one is onto or surjective function. So what is the definition? So a function f from a to b is said to be a onto or surjective function if every element of b is the image of sub element of a. See here, every element of b is the image of some element of a. That is, for every y belongs to b, there exists at least one x belongs to a such that f of x equals to y. मतलब कोडोमेन में जितने सारे एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में. राइट. एक से भी अगर ज्यादा भी है प्री इमेज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोडोमेन का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है. अगर ऐसा कोई एलिमेंट रह गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा. और अगर हर एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन प्री इमेज रहता है तो वो फंक्शन हो जाएगा सर्जेक्टिव और वन टू फंक्शन. ओके, चलो दोनों एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर एक होगा सर्जेक्टिव और एक सर्जेक्टिव नहीं होगा. नाउ लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. Let A be a set which contains 1, 2, 3, these three elements, and B be the another set which contains 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14, and F be a function from A to B and defined by f of x equals to 2x. Right. Now we have to check whether this function is 1, 2 or surjective or not. Right. Okay. Now if we draw the picture, then the set A which contains three elements only, 1, 2 and 3, right, this one, and another set B which contains 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, right, these elements. Now see here,
the element 1 is related to the element, which one? See here, if we put here 1, so f of 1 is equals to how much? 2 into 1, that means 2. So 1 will be related to the element exactly 2, this one, and 2 will be related to the element 4, and 3 will be related to 6, right? Now see here, and this is the function f, this one, okay? Now there are so many elements, in fact 4 elements. यहाँ पर देखो एक एलिमेंट है 8 जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट है 10 जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, एक 12 एलिमेंट है इसका भी कोई प्री इमेज नहीं है, 14 जो एलिमेंट है इसका भी कोई प्री इमेज नहीं है. So the definition was, for each and every element of B there will be at least one pre image, right? हर एक यहाँ पर जो एलिमेंट्स रहता है कोडोमेन में, उसका हर एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में. लेकिन यहाँ पर 4 ऐसे एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट 1, 2 और सर्जेक्टिव फंक्शन. तो इसको लिखेंगे कैसे? since 8 belongs to B but there does not exist any x belongs to A such that f of x is equals to 8. Now let's consider this example, let f be a function from R to R defined by f of x is equals to x minus 1 by 2. Now the question is, so that f is a surjective function. अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को हम लोगों को सर्जेक्टिव दिखाना होगा, और इसको दिखाएंगे कैसे? चलो इसको दिखाने का तरीका बता रहा हूं. Let f of x equals to y, right? Then you can write here y is equals to f of x कितना है? x minus 1 by 2, right? And this implies that 2y is equals to x minus 1, implies that x is equals to 2y plus 1. Now see here, write down the x in terms of y, and this will guarantee you that for each and every y there will be a x, and you can calculate the value of x from this one, right? So therefore अब लिखना क्या है? Therefore for each y belongs to R, यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ही R है, तो यहाँ पर R जब लिखोगे तो यहाँ पर लिख देना कि ये डोमेन है, सॉरी ये कोडोमेन है, राइट? सो ये कोडोमेन. So for each y belongs to R codomain, there exists x belongs to R, right? ये वाला हो गया डोमेन. डोमेन में हर वक्त एक x रहता है, such that x is equals to 2y plus 1, right? Hence this is a surjective function. So this is the proof. And the next one is bijective function, right? So what is the definition? So a function f from a to b is said to be a bijective function if it is 1 on and 1 to. See here, by का मतलब क्या होता है? दो, राइट? सो कोई फंक्शन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स वो फंक्शन अगर ऑन भी हो और ऑन टू भी हो, ये दोनों फंक्शन अगर वो होता है तभी उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. दोनों के अंदर मान लो कि वो फंक्शन ऑन है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो भी वो बाइजेक्टिव नहीं होगा. मान लो कि वो ऑन है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो भी वो बाइजेक्टिव नहीं होगा. और दोनों अगर नहीं हुआ तो होने का कोई बात ही नहीं, राइट? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सी हियर, सपोज दिस इज अ सेट A, दिस वन इज A and this one is the another set B. Suppose this one is another set B, right? And the elements of A, this one is B, right? This one is B, and the elements of A are A1, A2, A3 and so on. And the elements of B are B1, B2, B3, right?
Now see here, A is related to B1. Suppose A2 is related to B3 and A3 is related to B1, right? And this is the function f. Now for each and every element of A, there is only one element in B. हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए यहाँ पर देखो अलग अलग इमेज है, हर एक अलग अलग प्री इमेज के लिए अलग अलग इमेज है, राइट? सो ए पॉइंट हम लोगों को क्या बताता है? दिस पॉइंट सेज दैट दिस फंक्शन इज वन ऑन फंक्शन, राइट? और यहाँ पर देखो कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कोई यहाँ पर प्री इमेज नहीं है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट? ओके, अब क्वेश्चन ए होता है कि अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट मान लो कि यहाँ पर B4 है, राइट? तब ये क्या होगा? देखो अगर यहाँ पर B4 है मतलब यहाँ पर इसका कोई प्री इमेज नहीं है. दिस एलिमेंट B4 हैज नो प्री इमेज, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट वन टू फंक्शन. जब वो वन टू फंक्शन नहीं है तब वो बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है. नाउ describe with an example, okay? So that f from R to R given by f of x equals to 2x minus 1 by 3 is a bijective function, right? So the function f is a bijective function, right? So how we will show this, right? So first point one, you have to show that f is a one function. To show a function one function, we have to choose two elements from the domain, right? So these are the elements of domain such that f of x1 is equals to f of x2 implies that then f of x1 कितना होगा? So you have to put x1 in place of x, then you will get the value of f of x1, right? So the value will be 2x1 minus 1 by 3, exactly 2x1 minus 1 by 3. This equals to f of x2. f of x2 का वैल्यू कितना होगा? 2x2 minus 1, that means 2x2 minus 1 by 3. So 3 get cancelled. This implies that 2x1 minus 1 is equals to 2x2 minus 1, and this implies that 2x1 equals to 2x2, and this implies that x1 is equals to x2. तो देखो यहाँ पर कंसीडर किया था f of x1 equals to x2 और यहाँ पर जो मिला वो है x1 equals to x2, and this shows that the function given function is a one function. Therefore f is a one function. F is a one function, right? Now next is one to function, right? So let f of x equals to y. मैंने ये कंसीडर कर लिया. ये कंसीडर करने का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग x को लिखेंगे in terms of y, and that point will imply that for each and every y there will be a x. Then y is equals to f of x का वैल्यू कितना है? 2x minus 1 by 3. This one. This implies that 2x minus 1 is equals to 3y, and this implies that 2x is equals to 3y plus 1, and this implies that x equals to 3y plus 1 divided by 2. And this point says us, ये पॉइंट हम लोगों को यही बताता है कि हर एक y के लिए एक x रहेगा जहां पर x equals to 3y plus 1 by 2. Therefore for each y belongs to R, यहाँ पर डोमेन मेंशन करना है क्योंकि यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ही R है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर देना है कि कौन सा डोमेन है और कौन सा कोडोमेन है. So for each y belongs to R कोडोमेन, there exists x belongs to R, ये वाला R है डोमेन, such that x equals to 3y plus 1 divided by 2, and hence f is a one to function, right? और ये one to function दिखाने के बाद लास्ट लाइन लिखना है, therefore f is a one and one to function, and hence f is a bijective function. एक बाइजेक्टिव फंक्शन का पिक्चर ऐसे ही होगा, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होना, ये पॉइंट वन को मीन करता है.
और यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका यहाँ पर प्री इमेज नहीं है, वो पॉइंट 1 2 को इम्प्लाई करता है और ये दोनों पॉइंट एक साथ बाइजेक्टिव फंक्शन को इम्प्लाई करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज मेनी वन फंक्शन। सो नाम से ही पता चलता है कि ये फंक्शन क्या हो सकता है। मेनी वन फंक्शन का ठीक ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन फंक्शन में क्या था, हर एक अलग एलिमेंट के लिए वहां पर अलग अलग इमेज रहता था, लेकिन मेनी वन फंक्शन में एटलीस्ट देयर विल बी 2 एलिमेंट्स whose image are same, right? So let's know the definition. So a function f from a to b is said to be a many one function if there exist at least 2 elements x1 x2 belongs to a. That means domain में at least दोनों एलिमेंट रहेगा। कैसा? such that f of x1 equals to f of x2. So कोई फंक्शन अगर 1 है तो वो मेनी वन नहीं होगा, और वो अगर मेनी वन है तो वो 1 नहीं होगा। That means ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट है। दिस इज ए मेनी वन फंक्शन। क्यों ये मेनी वन फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पर देखो x2 x3 x4 ये 3 एलिमेंट्स है, लेकिन ये 3 एलिमेंट्स के लिए सिर्फ यहाँ पर इमेज एक ही इमेज है और वो है y2. Let's take an example. A function f from r to r defined by fx equals to 2x square, so that this is a many one function, right? So how we will show that this is a many one function? So let us consider 2 elements in domain. Let x1 is equals to 1 and x2 is equals to -1, right? Then f of x1 is equals to 2 into 1, right? 2 into 1 square, that means 2. And f of x2 is equals to f of -1 is equals to 2 into -1 square, that means 2, right? Therefore x1 is not equals to x2, but f of x1 is equals to f of x2. See here, दोनों अलग अलग एलिमेंट का यहाँ पर सेम इमेज मिला, and this equals to exactly 2, and hence this is a many one function. And the next one is into function. So into यहाँ पर नाम सुन के ही पता चल जाता है into का मतलब क्या होता है। किसी चीज के अंदर into का मतलब into the room, मतलब वो रूम फुल्ली कंटेन करता है, तभी तो उसको इनटू बोलते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही सेम चीज होता है। जो इमेज सेट होता है वो इमेज सेट फुल्ली डोमेन के अंदर रहता है, इसीलिए उसको इनटू फंक्शन बोला जाता है। दैट मीन्स इन दिस केस द इमेज सेट विल बी ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पर देखो ए y1 और y2 ये दोनों सेट को लेकर ए हो गया इमेज सेट, राइट? इसको एफ भी लिखते हैं, इसको डिनोटेड बाय इमेज ऑफ एफ, राइट? सो ये जो इमेज सेट होगा ये हमेशा एक प्रॉपर सबसेट होगा, किसका? कोडोमेन का। और अगर इसीलिए उसको इनटू बोलता है, देखो इमेज सेट इनटू द कोडोमेन, दैट्स व्हाई इट इज इनटू फंक्शन। फंक्शन एफ a to b is said to be a into function if there exists at least one element in b. That means in codomain में at least one element होना चाहिए। कैसा? Which has no pre-image. Now let's take this example. Let f be a function from r to r and defined by fx equals to mod x, and we have to check whether this function is into function or not. Now see here, for each x the value will be mod x, और यहाँ पर डोमेन क्या है? रियल नंबर। सो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जब एलिमेंट जीरो होता है तब ये फंक्शनल वैल्यू जीरो होगा, जब नेगेटिव होता है तब भी ये पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव होता है तब भी ये पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स रियल नंबर का यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका इमेज नेगेटिव हो सकता है। ये पहला वाला पॉइंट, right? So all the functional values are positive. So if we consider any negative number from the codomain, then there will not be any pre-image of the number.
लेट y इज इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू r। ये वाला r क्या है? एक कोडोमेन है, सो दिस इज कोडोमेन। सो कोडोमेन से मैंने एक एलिमेंट चूज किया और हमारा टारगेट है कि हम लोग इसको शो करेंगे जो इस एलिमेंट के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, राइट? सो राइट इट डाउन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू r। ये वाला क्या है? ए डोमेन है, डोमेन such that f of x is equals to y equals to -3, राइट? सो रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर मिलेगा क्या जिसका मॉड्यूलस लेने के बाद वो एलिमेंट -3 होगा? कभी नहीं हो सकता है। सो if we consider any negative number from the codomain, then there will not be any pre-image, right? And that's why this is an into function, and write it down. Hence f is an into function. Thank you guys, thank you so much for being here till the end. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड द JEE मेन एंड एडवांस एज वेल। थैंक यू।